Actually, hello. आप क्या कर रहे हो? Hello. Yes, sir. I'm audible, sir. सॉरी, Hello. Yeah, I'm audible, sir. थोड़ा सा लो है, लेकिन या यू कैन टेल मी. Yeah, yes. At present, sir, I'm working in Iron Exchange India Limited. ओके. Yeah, it is the service provider of Tata Motors in Jamshedpur, Jharkhand. सॉरी सॉरी. Uh, in Jamshedpur, Jharkhand, sir, क्या in Tata आयन Motors. एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड में हो आप? Yeah, yes, sir. विच डिपार्टमेंट? Actually, I'm related to environment department, sir. Mainly we एनवायरमेंट में हो? look, Mainly we look for water treatment. ओके, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पे हो. Yes, sir. अच्छा अच्छा. Yeah, we look over the operation and maintenance over there, sir. गुड गुड. Mainly. As a site in charge, I'm working over there. हाँ, एक काम करते हैं. लास्ट टाइम हमने शुरू किया था सप्लाई चेन मैनेजमेंट, तो उसमें करीब 1-1.25 घंटा तक it was going on, but then both the people left because they lost their connectivity. So what I'll do is I will brief that whatever you have lost, so that you also catch up with what was done till in the last session. ठीक है, पहले वो कर लेते हैं. Okay, sir. You are able to see? You are able to see the screen? Yes, sir. Yes, Yeah, sir. yeah. Yes, sir. Good. Yeah, so let us start. Basically, it's good to see that you have selected supply chain as one of the topics which are, because abhi to the whole industry, wherever you go, supply chain has become a key word for the profit of any organization. Okay, abhi kya hua hai? What has happened is that which language is comfortable for you? Hindi में बताऊं या English में? दोनों combine चलेगा? Yeah, दोनों चलेगा sir. Okay, sir. fine. Yes, sir. You should be comfortable. Ask me whenever you feel to ask something in between. If you do not understand, I can Okay, always sir. repeat and clarify. Okay, sir. तो अभी क्या है कि supply chain is a major part of any manufacturing industry or any service industry. Abhi the people have expectations of receiving the material has become very high. You must be seeing कि भाई Amazon पे next day delivery or delivery on so and so date, and then you go on getting the alerts कि भी आपका पैक हो गया है. Now it is already handed over. So till you receive, you go on getting the updates, and the companies are trying to reduce the time of delivery to the customer. It can be any customer. It can be from one industry to the other industry. It can be from industry to his distributor or his sales and marketing area, wherever across India, across world. So supply chain has become a very important aspect of any manufacturing or any organization. And the people are trying to control it and make it more automated to save the cost. Because supply chain has a very great cost factor involved with it. So the amount of money that they want to save on supply chain, that is where people are concentrating. क्योंकि एक materials management में there is one proverb: every rupee saved is a direct profit to the company. ये एक सिद्धांत है. So that's why people are trying to save money
not by by giving better actually services, not by giving poor services. क्योंकि पैसा दो तरह से बचता है, या तो एक फास्ट कर दो, जैसे कि आपको यू मस्ट बी अवेयर कि भाई धीरू भाई अंबानी एंड मुकेश अंबानी जो जामनगर का रिफाइनरी in the world which used to take, which normally takes 5 to 6 years to commission, उन्होंने 3-3.5 साल में जामनगर का प्लांट पूरा कमीशन कर दिया. So without compromising on any quality, the result कि 2 साल, for 2 years the output of the plant was covered 90% of the investment. See, it's a very great example of how companies try to save money and still do their work. So that is why supply chain has become a very important aspect for any industry. Now let us understand what is the supply chain. Now why it is called, it's not a one single entity or activity. It is a chain of events. It is not one event. That's why the word is supply chain management. You have to manage the whole link, not only one particular area. So that's why there is a famous supply chain is like nature. It is all around us. अगर आप कहीं भी देखोगे आप, if you see in your personal life, and suppose if you have to go to, let us say, from your hometown or from wherever you are to say Chennai, but he wants to go to Chennai from Baroda, हम क्या करते हैं? What we do? Unknowingly we are a part of supply chain. कि हम टिकट बुक करेंगे एडवांस में, फिर वो उतने बजे जिस दिन एयरपोर्ट पहुंचना है उस दिन उसके लिए टैक्सी मंगवाना है, फिर वो उस दिन हम पहुंचेंगे, फिर पहुंचने के बाद हम जब वहां लैंड करेंगे तो वहां कोई रिसीव करने आएगा टिल यू रीच डेस्टिनेशन. अगर ट्रेन में जाना है तो आप उसका अलग से अरेंजमेंट करते हो, 3 महीने पहले बुकिंग करते हो. फिर ट्रेन में ट्रैवल करना है, इफ यू आर ट्रैवलिंग देन यू आल्सो सी हाउ वेयर यू विल गेट फूड एंड सो मेनी थिंग. अगर आप if you try and see around yourself, wherever you go, you will see every element is a supply chain. If you go from your house in the market and there you are buying something, itself is a supply chain. Somebody may be buying monthly essentials, तो पूरा लिस्ट बना के ले जाओगे घर के साथ, मीन्स अपनी वाइफ या मदर है, जो भी है, सिस्टर है, तो आप पूरा लिस्ट बनाइए, वहां जाके खरीदोगे, फिर उसको कैसे लाना है, क्या क्या लाना है. These are all smaller things. आप supply chain is not something which is exclusively for the industry. Wherever you see, अगर आप if you try and open, keep your eyes open, you will see कि supply chain अपनी चारों तरफ है. So this was something, a definition which was given by Dave Waters, who was a supply chain specialist in USA. Sorry. Now, a very famous example of supply chain. Any one of you are aware about this photograph? डब्बा वाला बॉम्बे. कुमार, आपको पता है क्या है? Yes, sir. The lunch supply, sir, tiffin box. Yeah. See, this is a very world famous example और उसके ऊपर काफी रिसर्च भी हुई थी. हार्वर्ड तक इसके ऊपर स्टडी हुआ था कि there are thousands and thousands of people across Mumbai, and these डब्बा वाला, they have been existing for last so many years, 40-50 years, जब से इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है मुंबई में. और ये डब्बा वाले लोग अपने आपके घर से, they will take the tiffin from your house and deliver it to the person जहां उनको पहुंचाना है, उसी को वही टिफिन उसके पास जाता है. यानी एक फ्लैट में 10 घर है. If there are 10 houses in one flat, one building, 10 flats, वो 10 का अलग होता है. Now all those 10, they don't get mixed up. So it is a really wonderful thing to know how they are managing this whole show. So this is a very classic example of a supply chain management. They are managing a supply chain which delivers the food
Or it's not that they collect in the morning at 7 o'clock. They collect by about 10:30, 11 from every house. And by the time the lunch time happens, fresh, warm food is available to you. So in such a short time, they are managing to deliver the food to almost all their customers in their respective offices on the table. So this is a very classic example of a supply chain. Now let us see how supply chain evolved. There are 4 stages. This is called industry. अभी जो revolution चल रहा है, it is happening. That is industry 1, 2, 3, and currently we are in industry 4. Okay. So what is industry 1? Industry 1 was somewhere around 1784. अगर आप ऊपर देखोगे तो आपको दिखेगा 1784, around that period when the steam engines were invented. So mostly steam related power was used to do many functions. Primarily it was the trains to move the, in those days it was done by Britishers to move their soldiers and military items and whatnot they said they wanted. So it started way back in 1780s, and that was the first industry revolution which happened, wherein mechanization was introduced and use of steam power was implemented. With electricity वगैरह develop भी नहीं हुआ था उतना. Then comes around 1870, that is called industry revolution number 2, जहाँ पे mass production and use of electricity was primarily used. Mass production means automobile industry developed, engineering industry developed. So where first time a mass production, every day they are coming out with say 100 cars, 200 cars. In those days it was not like what is happening today. But still there were assembly lines. From one end they start the assembly, at the other end the full car comes out. Those kind of concepts they started way back in 1870. So more and more mechanization happened, more and more mass production happened, and then electricity was used. Then comes industry 3, revolution number 3, which was in 1969, around 1969. Jab IT and electronics started developing for industrial use. Computers were launched. They were very initial raw technology what they had, large computers. So industry started using computers and IT to the extent that they were able to use with those technology in those days. In those days there were cards in computers which had holes in it. So each for every activity, the whole जो भी हम software बनाते हैं, that was not in the form of a software, that was in the form of cards. वो cards में holes punch होते थे और accordingly the computer would function. तो industry 3.0 में जब electronics launch हुआ, lot of electronic components got introduced, and then IT and internet was slowly started getting into the industry. So that was one very big revolution which we have seen. Because now I'm 71. I have seen that revolution, how it happened. In my company also, when the computers were applied for the first time, there are about 100 computers there was a link, LAN network se kar rahe the. And we as an engineer, I am basically a mechanical engineer, 1975 batch, mechanical engineer. So we were greatly confused and we were thinking, ये computer क्या करेगा? अपने दिमाग से जो होता है उससे अच्छा तो कोई नहीं हो सकता है. So that was the days when people were not accepting even the computers so easily. But as the time went, then people realized, and then it became a part and parcel of any industry. Internet बाद में आया,
that was primarily, initially it was limited to smaller areas. If you remember, पता नहीं आपको कि we used to have in early 70s a mobile phone. When mobile phones were launched, so incoming call का 17 rupees, 18 rupees we had to pay. और फोन काफी बड़ा था. It was almost about 10 inches and 3-4 इंच मोटा सा हैंडसेट लेके घूमना पड़ता था. But still, so that is how the industry revolution 3.0 started. And अभी जो चल रहा है industry 4.0, people are talking for last 6 to 7 years कि जहाँ पे industry 4.0 में not only electronics, IT and internet have become major participants, but AI technology also, artificial intelligence से, robots से भी manufacturing होने लगा. Lot of robotics and automation started happening in every industry. So that is currently we are into revolution 4.0. And with the development of each revolution, the supply chain management also went on a major change. Now, this is an example in first and second phase of industrial revolution. Since there was no computers in those days, normally, and they were all one single unit manufacturing a particular product or products. There were departments like production, stores, accounts, and purchase. जो आज भी है. Even today also it is there. Now, in those days, there was no linkage between each of the department directly. Means people were independently acting on each of the department. So every departmental head of production or stores and accounts and purchase, they won't share anything in common with each other. So the works manager, in those days, the concept was of works manager. And the works manager would call for weekly meeting, monthly meeting, quarterly meeting, review meetings, जिसके अंदर वर्क्स मैनेजर सबको इकट्ठा करके he would then share कि what company wants, कंपनी का expectations क्या है, कौन से डिपार्टमेंट को कहाँ पुश करना है, because all the reports were going to him. Stores वाला का stores report also will go to him, production report also will go to him. So he knows what is the health of the organization. So if there are any changes to be made, or if some department is becoming weak, then he would pull them up. So इस तरह से the works manager was a center point for the complete functioning of the organization. So this was a typical case. और थोड़ा सा you can say कि works manager position was very important in those days. People were afraid of just even knocking the door of works manager. I have seen that kind of a working way back in 75, 76 when I started my career. And we used to have these weekly meetings, and then in the weekly meeting, next week mein kya karna hai, that was being told to everyone, what is expected. So that is how the things were happening. So, but that was only in first and second phase. It was one-to-one contact, and there was no automation. Then comes SCM, supply chain management. Now, what is supply chain management? Supply chain management mein, it integrated the whole operations of an organization. Right from raw material, suppliers, managing suppliers, manufacturing, transportation, that is logistics, retailing means supplying to the retailers, then from retailers to consumers, and consumers se jab demand aata hai, so again it goes back to the raw material. So this became a cycle, and then this started becoming an integrated cycle. So जो पहले individual था वो अभी एक loop में आ गया, and not only those 4 major departments, क्योंकि in first and second phase there were textile mills. So textile mills was being run, textile mills hai, they were being run by the owners, and the owner had a final say.
in whatever that happens. He would do the purchasing of cotton. He would sell also. Only thing is, so that's why he was a nodal point for controlling the entire manufacturing. कितना कपड़ा कब बनाना है, किसको भेजना है, all the decision was centered around. Then this SCM started getting implemented, and all activities of production started getting linked. Now, then further, lot of integration happened in the supply chain. There are new things which came up, saying that customer analysis, purchasing and supplier partnership, inventory management. There was no inventory management and control to first and second stage of revolution. Then demand and lead time management. So these are the words and these are the techniques which got introduced in supply chain management. Manufacturing and remanufacturing, assembly, storage and transportation, order fulfillment. The words have changed. Order fulfillment. Even today, if you see Amazon, they are using the word order fulfillment. That means they are fulfilling the order what they have received. And so this became a complete integrated cycle with lot of modern things coming up, and specialization happened in each and every area. And they were all interconnected because now the computers were available. The whole information flow was so made that that even the manufacturer the plant head of manufacturing department, production department wanted to know कि भाई मेरा next week का जो मेरा schedule है उसके लिए मुझे क्या raw material चाहिए, क्या tools चाहिए, वो available कैसा है. So he was able to see that. Even today also, you know, okay, bhai, and then there are pre-alerts you get. Okay, particular item is there only for next 1 week, only for 3 days. For the 4th day onwards, a particular item is not available. So they would take that decisions of either getting it faster or changing their production line. उतना serious नहीं है, लेकिन पहले था कि inventory management was not so precisely implemented. Previously, inventory management was known as stores management. Stores को manage करते थे. Inventory management and stores management, there is a big difference. Here, stores management में you are only managing your entire store, कितना stock है और receipt and issue. Store was only responsible to that extent. Now, inventory management has become a specialized branch wherein they are linked to the production, they are linked to the sales, and they decide, then they give pre-alert. What is there in my stock? How much needs, what is going to come in, when I have to issue. So a lot of things complicated and refinement started happening in the industry in every area of manufacturing and distribution. So there is a definition. Supply chain management का एक definition है, which was coined by Keith Oliver for the first time in 1982. Now, Keith Oliver was a specialist in supply chain management that was introduced. When it was introduced, he was one of the lead person. He was a consultant in UK and USA. And this is how, for the first time, he gave the word supply chain management. So then after 1982, this word caught up the attention of every industry, and then it became a very common word, which is even existing till today. So what it says, SCM is based on the idea that nearly every product that comes to the market results from the efforts of various organizations that make up a supply chain. तो ये एक organization का या एक services का काम नहीं है. It is a series of chain of events that from manufacturing till it reaches the consumer. Although supply chains have existed for ages, most companies have only recently paid attention to them
as value added to their operations. तो पहले supply chain उतना as it is written by him, it was not very prominently used. But then when people realized that the cost that they can save in improving the supply chain, then they realized, and now it has attained a very specific subject by itself. 1 minute. Scm is also called, now this is the latest definition, which is short and sweet and to the point. It is called the art of management. Now it is not something which is a activity of a management. It is an art. Art of management of providing the right product at the right time, at the right place, and at the right cost to the customer. Now these rights are very important. कि right product, आपको जैसे अगर हम, if you have ordered something to anybody, I'm not talking of online. Suppose if you are going and asking your shop, मुझे ये चीज चाहिए, वो बोलेगा कल आपको सुबह मिल जाएगी, अभी स्टॉक में नहीं है. तो what happens is the right product means you can't, they will not give you some other product other than what you have ordered. At the right time means if he has said tomorrow morning 10-11 बजे मिल जाएगी, तो आपको 11 बजे तक मिल ही जाएगी. At the right place, यानी जहां आपने मांगा है वहां पहुंचाना है, and at the right cost to the customer. Now this is becoming a very short and the latest definition of a supply chain management. तो आपको कुछ ज्यादा लंबा याद नहीं रखना है. If you remember this definition, you will be able to write at least 10 lines based on that. एक पेज भर के आप पूरा लिख सकते हो कि what is supply chain. It is the right product, what you have asked. आपने A product मांगा है तो A ही मिलेगा, B नहीं मिलेगा. Right time, आपने जब मांगा है तब, आपने जहां मंगवाया है वहां, और at the right cost. यानी अगर बोला कि भाई डिलीवरी का चार्ज मैं 10 रुपये लूंगा या 50 रुपये लूंगा, तो वो उतने में ही आना चाहिए, फिर उसका कॉस्ट वेरी नहीं होना चाहिए. That is another definition. Supply chain management outlines the strategy and activities that go into planning. Now, this is a little elaborated definition. What it says, it's a strategy. Supply chain is a strategy and activities that go into planning, sourcing, producing and delivering goods as well as handling returns. तो ये एक स्ट्रेटेजी है कि कैसे आप प्लान करोगे, कहां से लाओगे आपका रॉ मटेरियल, कैसे आप प्रोड्यूस करोगे और कैसे उसको डिलीवर करोगे. सो इट्स अ स्ट्रेटेजी. इट इज नॉट सिंपली एंड कि भाई आपने रॉ मटेरियल ले लिया, you have manufactured, you have handed over to the transporter takes to the destination, or then from destination somebody picks up. So no uncertainties. So that is a strategy, how you will plan your entire supply chain to see that not only delivery, lekin if there is a defective product, then it has to be also brought back. So both the activities of delivery and returns are to be strategized. Now here logistics is a very integral part of supply chain. Without logistics, supply chain is incomplete. Logistics focuses on the right product being at the right place at the right time, at the right price. उसका भी definition similar है. लेकिन उसका focus कहाँ है? Right product, जो उसको product मिलती है, वो बिना damage के, वो right product जो आपके पास आया है, उसी को right place at the right time पहुंचाना है. Price means, why price means he would decide कि भी मुझे from Baroda I have to take it to Mumbai, he will charge say 50 rupees a kg. Then if he can do it at 45 also, that is better. So it is like that. So logistics also has a similar definition, but its focus is on moving material from one place to the other place.
So logistics management is the part of supply chain process. It is a part of supply chain. It is not a supply chain alone. It is a part of very important part of supply chain process that plans. So what the logistics will do? It plans, implements, and controls the efficient, effective flow and storage of goods, services, and related information from the point of origin to the point of consumption to meet customer requirement. It's a very good definition of logistics. From one end to the other end till it reaches the customer, what the logistics will do? It will plan. What type of vehicle I need, उसका लोडिंग अनलोडिंग के लिए कैसा लेबर चाहिए, मैं वेयरहाउस में कैसे उसको स्टोर करूंगा, हाउ विल आई स्टोर, हाउ विल आई रिट्राइव, हाउ विल आई लोड इट ऑन द ट्रक और ए ट्रेलर or a small tempo, what is the distance that it has to travel. So it plans a lot of activities before even starting the dispatch. Or related information is something what that he gives the information. ये loading हो गई है, truck number ये है, LR number ये है. Now this is something which you must be seeing in your day-to-day life, in your industrial life, that you must be also coming across your vendors who will be sending you the SMS or WhatsApp messages or email. Maybe we have loaded this in a truck number so and so, LR number so and so, insurance uska cover karo. So all that kind of information also flows when by the logistics service provider. So ये definition भी काफी important है from the point of view of knowledge. And अगर आपको कोई पूछता है कहीं पे technically, so then this is how the definition is. Now Philip Kotler, are you aware about Philip Kotler? No, sir. Bhatti, how about you? Okay, anyhow, I'll explain to you. Philip Kotler is called father of marketing, basically. Philip Kotler ने पूरा marketing के ऊपर, he is a guru of marketing from USA, and his books are considered as the sacred books, like अपना भगवत गीता है या बाइबल है, उसके जैसी book है, reference book. So Philip Kotler was the originator of marketing strategies and marketing के guru है. He is no more there now, but his books are reference books even today. He developed the whole concept of marketing, and then a lot of improvements have happened. So he also gave a definition, which is almost similar. Planning, implementing, and controlling the physical flow of material and finished goods from point of origin to point of use to meet customer needs at a profit. See, दो तीन चीज आप ध्यान रखिए इसमें. What is logistics? From point of origin. एक हमेशा कोई भी logistics या SCM में, this is a fundamental thing that happens is from the point of origin. अब जहां से or till it reaches the customer, and in doing so you should be able to make some profit. And it is a physical flow. Logistics में क्या होता है? The material flows physically from point of origin to the point of destination. Now, why it is there are two different words, flow of materials and finished goods. The materials means raw materials, spare parts, components. ये भी company has to bring in, and they have to dispatch the finished goods. That's why there are both the words are included in this definition by him. But the most important thing is to know in logistics and SCM is point of origin till it meets the customer need. And you have to make a profit. You cannot be doing in a loss. That is why you have to plan your supply chain management and logistics in such a way that you don't end up making losses. So your planning of, you have got one order from Chennai,
one order from Bangalore, one order from Kolkata. छोटे अगर आपको ऐसे अलग अलग कोई geographical area से you get an order, then how do you see? This is what is interesting. हम आपको भी पता होगा कि how do you plan? What is the base efficiency in supply chain या logistics? कि भाई you have to plan in a such a way that you get one vehicle जिसके अंदर आप सारे products रख दो. तो ऐसे रखो कि suppose if it has to go to Pune first, तो पुणे का जो डिलीवरी है वो सबसे पहले निकलना है. It cannot be stored at the end of the vehicle अंदर में. It has to be at the outskirts. So your load planning of a vehicle also becomes important. And one single route, once you decide a route, वो route में जितना भी आपका supply देना है, if you do that in a systematic planned manner, आपके cost control में रहेंगे. If you want to dispatch one in Pune, अलग से गाड़ी में भेजो, एक बैंगलोर भेजो, एक चेन्नई भेजो, या तो बैंगलोर चेन्नई का एक अलग कर दो, लेकिन पुणे को अलग, then your cost of deliveries become very high. That is where you will tend to lose money. So that's why planning is very important in supply chain and logistics both. So let us get back to SCM. So it says SCM includes the high level process involved in sourcing and buying raw materials and eventually creating finished goods. This is for a manufacturing industry. तो उसमें ऐसा नहीं है कि भाई जो फिनिश गुड्स है उसी को कस्टमर तक भेजना है. It also includes buying raw materials from different sources. You will be having raw materials from different geographical locations. कोई गुजरात से आता है, कोई साउथ से आता है, कोई नॉर्थ से आता है, कोई नॉर्थ ईस्ट से आता है. It all depends upon the vendors that you have developed for a better quality product. So what happens is, now how you will, you have to manage to see that all the material comes to you in a right time so that you can produce the goods accordingly. So it is backward, right from the raw material till you make finished goods, and then onward delivery of finished goods to the end customer. So as I said previously, SCM uses logistics. That's why logistics is a part of supply chain management. So what SCM does, uses logistics to deliver goods to the customer, but it is ultimately strives to boost the bottom line and increase a business competitive edge. Supply chain management, there are so many, as we saw, there are so many areas which are chained, linked. So every area, every activity, there is a link and then there is a cost. So logistics also is a part of one of the activity without which it is incomplete. But ultimately, the supply chain manages the logistics in such a way that the cost of transportation and delivery are minimized, optimized. I will not say use the word minimized. It is optimized so that you make profit out of your business. Now let us, this is just for your information, in supply chain also, everyone is talking nowadays about artificial intelligence, AI. So it has just started. There are both the opinions. AI will take over the human beings. If it happens this way, the way the progress is happening, the artificial intelligence will take over the human beings. And maybe 20, 30 years down the line, we will see that we will become slaves of AI. That is robots primarily. तो क्योंकि आजकल जो डेवलपमेंट हो रहा है वो बहुत हाई स्पीड से हो रहा है. And already, if you are reading in the newspapers or TV, people are going to lose their jobs. क्योंकि AI में आज की तारीख में अगर आप चैट GPT डाउनलोड कर लो आपके कंप्यूटर के ऊपर,
ask anything, and it gives you answers in flash of a second and in detail and the way you want the solution. ये तो सिर्फ आपका पर्सनल यूज की बात हो रही है. So one thought of process, thought of people, they are saying, we should not develop AI beyond a certain point, or there are laws to restrain them. One other way, people are saying that is the future. So अभी काफी उसके ऊपर मारामारी चल रही है. But ultimately, AI is going to be a part of our lives. Maybe 5-7 years down the line, you will also be affected, or you will see that in your departments, AI will come in. AI means या तो robots आ सकते हैं, या कोई systems ऐसी आएगी जिसमें हो सकता है कि अपनी जो इंटेलिजेंस है, अपनी जो रिक्वायरमेंट है कंपनी को, वो रिड्यूस हो जाएगी. So maybe one has to do multi-functioning, multitasking. So both the ways people are afraid about this. लेकिन अगले 5-6 साल में सप्लाई चेन में काफी AI का चलन आ जाएगा, wherein people will get the results faster for everything that you do. लेकिन इसके ऊपर आप ध्यान रखना, on artificial intelligence जो भी अभी डेवलप हो रहा है, please try to read the articles in the newspaper or TV कि क्या क्या डेवलपमेंट हो रहा है, कहाँ हो रहा है. गूगल में भी see the person who developed the artificial intelligence in Google, he left the company recently. अभी 15 दिन भी नहीं हुए हैं. He has left the company saying that he made a big mistake of developing these AI tools, because he is now afraid maybe 50 years down the line, the humans will lose their importance. तो उसके ऊपर नजर रखना, और AI के ऊपर अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे और नजर रखोगे तो आपको अगले 4-5 साल in your career, maybe 10 years down the line, you will have to face these harsh realities. So you will have to be also prepared for understanding how the AI tools work in your own department, in your own company, how your company is going to introduce. And there, if you are well prepared, you can be a part of that implementation. अगर आप AI के well prepared नहीं रहोगे तो तब लेट हो जाएगा आपके लिए. तो AI के ऊपर नजर रखना, उसके आर्टिकल्स जो भी आते हैं वो आप पढ़िए, क्या डेवलपमेंट हो रहा है, कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है. इंडिया में आते आते उसको टाइम लगेगा, लेकिन फिर भी वो 5-6 साल में आ जाएगा. अभी भी काफी ऑलरेडी आपके मोबाइल पे भी चैट जीपीटी आ गया है. नाउ पीपल आर डाउनलोडिंग चैट जीपीटी, और उससे मैं देख रहा हूँ कि जो घंटों का काम था वो मिनटों में हो रहा है. जो हम 1-1, 1.5 घंटे में कंप्यूटर में सर्च करके करते थे, अभी वो चैट जीपीटी में सेम काम आपका मिनटों में हो रहा है. इट इज दैट एक्सेसिव स्पीड एंड द वे द AI टूल्स आर बीन डेवलप्ड, वो काफी इंटरेस्टिंग है. तो उसके ऊपर नजर रखना आप. Now it says role of logistics within supply chain management. तो just comparison है दोनों का. So supply chain and logistics. So what SCM does, as what we have discussed, planning, sourcing, manufacturing, delivering and returning. ये supply chain management का basic fundamentals है. जब logistics क्या करती है? It does inventory control, materials handling and transportation, storage and warehousing and transportation. WMS is warehouse management system, where you use the WMS for location, pickup and drop. पता नहीं, Javed ji, do you use this WMS package in your company? WMS is used for our finished goods right now. Correct. So, Yeah, I'm giving a short example. Yeah. It's Some very suppliers are interesting. और काफी अच्छा काम हो रहा है उससे, WMS यूज करने से. So
मटेरियल हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन, एंड रिटर्निंग में पैकेजिंग, हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन। अगर आपने कोई, देखो फॉर एग्जांपल आई विल गिव यू अ सिंपल एग्जांपल जो अपने डे टू डे लाइफ में होता है। इफ यू ऑर्डर समथिंग ऑन अमेजॉन, यू रिसीव इट, यू फाइंड इट डिफेक्टिव और नॉट टू योर सेटिस्फेक्शन, तो आप उसको रिटर्न कर सकते हो विद इन 48 आवर्स या जो भी टाइम लिमिट दिया है। सो व्हाट हैपेंस, द कंपनी विल सेंड यू अनदर पीस एंड दे विल टेल यू कि उसी कुरियर को आपका जो डिफेक्टिव पीस है वो उसको वापस कर रहा। तो आपने तो पैकेज खोल दिया है, सो वो खुला हुआ पैकेज और उसके जो डॉक्यूमेंट्स है, दैट कुरियर विल कलेक्ट, ही विल रीपैक इन हिज वेयर हाउस। अमेजोन तो कोई कंपनी नहीं है, मीन्स दे आर द सर्विस प्रोवाइडर्स। तो ये जो कुरियर कंपनी है, दे विल टेक इट टू देयर वेयर हाउस, वहां उसको रीपैक करके जहां उनको वापस, जो वेंडर है, जो मैन्युफैक्चरर है, उसको जो वापस भेजना है, वो लोग पैकिंग भी करके अच्छी तरह से उसको वापस भेज देते हैं। So basically, logistics is all on materials handling, warehousing, and transportation, and all related activities with these three major activities. Now, what are the key differences between both? Key differences between SCM and logistics. So logistics are activities in supply chain management. Again, I'm coming back to the same what we discussed. Are activities in a supply chain management. SCM covers a variety of activities. It is not only transportation and delivery, including production, inventory planning, labor planning, materials and facilities management, manufacturing and delivering goods. So supply chain is a larger area wherein logistics is one of the activity. SCM works towards improving processes to create competitive advantage, while logistics emphasizes meeting customer needs and expectations. ये difference है. सप्लाई चेन मैनेजमेंट कंट्रोल करने से कंपनी क्या करती है कि उसका कॉस्ट, जो काफी सारे एरियाज जो पहले हमने वो सर्कल में देखे हैं, वहां सारे एरियाज में दे ऑप्टिमाइज देयर कॉस्ट, दे डू द कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट टू सी दैट देयर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन गेट्स ऑप्टिमाइज्ड. So sometimes you will see a item which is available for 1,000 rupees, maybe 6 months down the line, they will sell it at 900 rupees. Not because there was no demand and supply, but then it happens that company will say, okay, we have improved. They have introduced various warehouses nearby to every city. So we have reduced, saved on transportation cost, logistics cost. So SCM improves all areas of the chain, whereas logistics is only in meeting customer needs and expectations. Logistics focus, उसका focus logistics का क्या है? Efficient and cost-effective delivery of goods to the customer. Now, cost-effective is a very important word which we have discussed earlier. कि multiple location में आपको you have to deliver the material, then how you plan and how you reduce the cost of delivery. So logistics का focus only in delivering the goods. Now, key differences between SCM logistics are still continuing. Same thing, थोड़ा detail में दिया हुआ है. So as this you can save the screen. Whatever I have spoken, it is the same thing. अभी recently industry में क्या हुआ है? I think both of you, I don't know whether you are aware कि जब logistics की कोई बात करता है, people say logistics वो तो transportation हो गया.
But no, it is not transportation alone. Because as we have discussed previously, it's a complete cycle of from point of origin to the point of delivery. That is, point of origin could be from a factory, take it to the warehouse, store it in the warehouse, then based on the orders that are being given by the company to organize various items in a optimized way, selection of vehicle, timing of delivery, and then the delivery. तो ये जो stores management है, warehouse management है, that also is a specific topic by itself. I used to take lectures with Indian Institute of Materials Management, Baroda, on stores management and export and import management. There is a 6 months course which was going on, I think abhi bhi hai, on stores management, Indian Institute of Materials Management. वो हर एक बड़े सिटी में है, बड़ौदा में भी है. And I used to be a faculty, we used to have evening classes, and stores management 6 महीने का कोर्स पूरा हम पढ़ाते थे. So it is not simply stores, लेकिन अभी the word stores has gone. People are using warehouse management. That's why there is a software which called warehouse WMS, warehouse management system. Again, it is not a software, WMS. So warehouse management also has become a very art by itself. So कभी भी logistics means transportation नहीं होता है. Transportation is a very small part of the logistics activities. Now, this is a recent report which has come. The logistics business is increasing day by day because the industry is growing. More and more investments are coming. So this is what it says, annual growth of around 15.5%. According to various market research. The sector employs around 22 million people. Chota mota nahi hai, there are 22 million people who are employed in logistics business and expected to create another 1.2 million jobs by 2025. How so many jobs get created? अगर आप थोड़ा स्टडी करोगे, and then if you try to see around, if you read the some articles from the government of India, newspaper में भी आते रहते हैं, journals में भी आते हैं, कि भाई government of India is launching what is called as Delhi Bombay high speed rail corridor, जहाँ double decker trains, container trains will be moving. There is an expressway, Delhi Mumbai expressway, where the whole journey time is reduced by half. From Baroda to Mumbai, it will be not more than 3 to 3.5 hours. Because 6-lane highway बन रहा है. ऐसा यहाँ नहीं, all over India ऐसे हो रहा है. Why? Because the logistics cost has to be brought down. It is not because government wants to show it to the people that उन्होंने काम किया है. क्योंकि अगर ये logistics time अगर हम cost reduce नहीं करेंगे, so then the industry cannot sustain for a long period of time, not only in India, but for exports also. So roads, railways, bridges, tunnels, jahan trains were not reaching, trucks were not reaching, government has done so much of investment कि the entire scenario has changed nowadays. आपको पता भी, so many new trains are launched. That is all because of reducing the logistics cost at a fast speed. लोगों को भी speed भी चाहिए और accuracy भी चाहिए. So that is why 1.2 million jobs क्यों create होंगे? Government is going to, ये जो high speed corridor है इंडिया में, not only between Delhi and Mumbai, it is Delhi, Kolkata, Bangalore, Chennai. So there are many corridors which are coming up, और हर एक corridor में at a particular places where there is a concentration of a particular industry. For example, Gujarat में they are coming out with a warehousing station, जहाँ पे जितना कार्गो वो एरिया में है
वो ये वेयरहाउस में आएगा जो रेलवे स्टेशन के पास में होगा. So people don't have to come all the way to give their products to Ahmedabad or Baroda. So lots of warehouses and green zones are coming up in along all the corridors. So that is how the employment will increase. Then there is a inland waterways. Now inland waterways, अगर आप study करोगे, it's something which is developing slowly but steadily in India. गंगा रिवर में ये काफी पॉपुलर हो चुका है और वाराणसी और कलकत्ता के बीच में देयर इज ए इंडियन वाटरवेज 1 देन इंडियन वाटरवेज 2. तो इंडियन वाटरवेज जब इंट्रोड्यूस होगा हो रहा है तो उसमें भी मैन पावर चाहिए. So that is how the logistics sector is going to increase the employment. At the same time, logistics may understanding the various types of current developments of WMS, then transport management system software, TMS. There are a couple of softwares which are now people using it. पहले अगर आपको if you see about 5-6 years back when the GPS was introduced, we truck में GPS लगा दो. Why it was required? It was an additional expense. But why it was required? Because the industry or the stores manager or the warehouse manager or the company wanted to know the goods which has dispatched on so and so date and which are supposed to reach on so and so date and time. Oh, live kahan hai? Where is that vehicle? So they want to even control the movement of the vehicle by GPS system. So this is one of the advancements which happened in logistics. Now there are further advancements which are coming. Similarly, now there is another software which is given to the drivers जो उनका मोबाइल से लिंक्ड है. Now मोबाइल से लिंक्ड है तो आप बोलोगे वो मोबाइल स्विच ऑफ कर देगा तो कैसे पता चलेगा? No, it is not linked to their SIM card. It is linked to their basic phone. क्या कहते हैं उसको? Every phone has a typical number. उसके साथ लिंक हुआ है. IMEI number. हाँ, IMEI number. So that is how they are able to know. अगर उसे स्विच ऑफ कर दिया तो भी पता चलता है कि गाड़ी कहाँ खड़ी. So a lot of developments are happening, and one has to keep a track. आपको कोई ब्रेक लेना है 5 मिनट का या we continue? Yes, sir. We can take. हाँ? Yes, sir. We can take, sir. 5 minutes. No. If you want, I can continue. I have no problem. ठीक है. Let us have a break of couple of minutes. आप fresh हो जाइए. In 5 minutes we are meeting again. I'm continuing. Javed, is it okay? Yeah, no tension. We will have a break of 5 minutes. ठीक है?
So I mean, Are you back? yes, I mean, Yeah, Kumar. Yes, sir. Yes, sir. We Good, can good. continue. Yeah, we go further now. अभी तक जो whatever we have discussed, if you need to have any clarification या कहीं भी पूछना है तो मुझे बताइएगा. Okay, sir. ये एक important parameter है जो as a person attending this course कि ये official report है Government of India का कि logistics in India is at 13 to 14% of the finished goods product, जो दुनिया में on an average 8% है. So whatever Indian exporters are losing competitive advantage. To improve this 13 to 14% towards 8%, government is doing all what I said. They are building highways, they are building trains, double-decker trains. काफी काम हो रहा है only because of this factor. So the government and the industry, CII के जो reports आते हैं या टीवी पे उनके lectures आते हैं, अगर आप वो देखोगे तो even industry wants this cost, logistics cost to come down. तो ये आपको ख्याल होना चाहिए अगर आपको पूछ लिया कि भाई what is the logistics cost in India, तो it is around 13 to 14%, जबकि world over it is 8%. So let us see some of the logistics services. One is transportation logistics. As the meaning transportation itself, it is a thing to move goods from one place to the another place, either via land, sea or air. Warehousing logistics. So that is called, within the company, it is called stores. Now companies are also using warehouse. Technically now most of the industries have started using the word warehouse, even for within the company stores. Stores काफी पुराना हो गया है word. So this is of safekeeping of stores in good and secure location. Now, each individual is a topic by itself, and हर एक के ऊपर पूरा 2-2, 3-3, 4-4 घंटे के seminars कर सकते हैं. Because if you try to go deep into every aspect of these things, then there are a lot of work that has happened. Distribution logistics. Now, transport किया, warehouse किया, फिर warehouse से ultimate customers तक तो जाना है ना. That is called distribution logistics.
जो अभी उसके लिए जो करंट वर्ड पीपल आर यूजिंग इज लास्ट माइल डिलीवरी. फ्रीक्वेंटली आपने देखा होगा कि भाई लास्ट माइल डिलीवरी नीड्स टू बी इम्प्रूव. इवन ये जो 14% जो अपना कॉस्ट है, उसमें द हाईएस्ट कंपोनेंट इज लास्ट माइल डिलीवरी कंपोनेंट. तो आपने देखा होगा, अगर नेक्स्ट टाइम व्हेन यू सी और ऑर्डर एनीथिंग ऑन अमेजोन और फ्लिपकार्ट, उनके जो मैसेजेस आते हैं वो आप देखिए, या तो उनका स्टेटस जब आप देखते हो तो देखिए. ही विल से रीच सो एंड सो वेयर हाउस, देन इट विल पिक्ड अप फ्रॉम वेयर हाउस, जो उसका टाइम और डेट देते हैं. वो आपके सिटी में भी आ जाता है. आपके सिटी में आया डायरेक्ट नहीं आता है. इट कम्स टू, लेट अस से आई एम इन बड़ौदा, सो इट कम्स टू अहमदाबाद. तो पूरे गुजरात का जो भी इकट्ठा होता है वो पहले अहमदाबाद में आता है, फिर अहमदाबाद से बड़ौदा आता है, फिर बड़ौदा में से मेरे घर पे आता है. और एवरी एक्टिविटी इज दे आर इन्फॉर्मिंग यू वेल इन एडवांस. तो यही देखने की चीज है. जो लास्ट माइल डिलीवरी में अगर आप ये सब में डिफरेंस देखते जाओगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल फील कि लास्ट टाइम डिलीवरी में क्योंकि बड़ौदा आ गया है, लेकिन फिर भी वो बोलेगा आपको कल ही मिलेगा या परसों ही मिलेगा, या तो डिलीवरी दे हैव प्रॉमिस्ड. In one of my case, they promised a delivery on 6th of a particular month. The material arrived on almost third evening, third night, late night, according to their message. तो मैंने सोचा चलो भाई 2 दिन जल्दी आ रहा है. But no, they delivered only on 6th. Why? Because they had already planned deliveries for 5th, 4th and 5th. So out of turn delivery वो नहीं दे सकते. So that is how distribution logistics plays an important role. Then it's an overall supply chain management. Project logistics, ये totally a separate part of logistics है, जहाँ पे अगर आप कोई इंडस्ट्री सेटअप कर रहे हो, वहाँ बॉयलर लाना है, that is I'm giving example, which is say 50 tons, 60 tons, 100 tons capacity. It is some 15 meters in diameter और 30-40 फुट लंबा है. तो then there are सीमेंट इंडस्ट्री में, पेट्रोकेमिकल में, packages of 250 tons, 300 tons are very common. 150-200 टन के ऊपर के तो काफी पैकेजेस होते हैं उनके, और वो भी लंबे होते हैं, 30 meters, 20 meters, 6 मीटर डायमीटर. ना 6 मीटर डायमीटर अगर आप सोचोगे तो 6 मीटर बोलने में आसान है, लेकिन अपने जो इलेक्ट्रिकल के जो ओवरहेड लाइंस है, दे आर एट 4.5 meters, maximum 5 meters. So project logistics of moving a project cargo from one place to the another place is another challenging logistics assignment. I have done that myself many times. कि L&T सूरत से लेके जमशेदपुर तक हमको बॉयलर पहुंचाना था. It was 150 tons, it was 30 meters long, उसका डायमीटर भी कुछ 5.5 मीटर था. And then see that it is a challenge at every place. रोड पे it is a challenge at every nook and corner of the road. उसका प्लानिंग 6 महीने पहले से होता है, रूट प्लानिंग होता है, इलेक्ट्रिकल वायर्स कहाँ लगते हैं. इन रूट प्लानिंग ऑल्सो देयर इज अनदर सब्जेक्ट बाय इटसेल्फ. Project logistics is a detailed subject by itself, where heavy duty cargo is moving from one end to the other end, and there are specific challenges related with. तो कभी भी आप देखोगे, शायद आप लोगों ने देखा होगा कि टरबाइन, ये विंड टरबाइन की ब्लेड्स जो ट्रक के बाहर निकलती है उसके आधी पूछ तो. विंड टरबाइन ब्लेड अगर आपने कभी रोड पे मूव होते देखी है तो कभी रुक जाइए वहां पे 5 मिनट के लिए और देखिए कि उसने कैसे उसको ट्रक पे बिठाया है, कैसे उसको बांधा है. तो आप देखोगे तो आपको भी लगेगा यार मोर देन 50% इज प्रोजेक्टिंग आउट ऑफ द व्हीकल,
स्टिल उसका बैलेंसिंग हुआ है सेंटर ऑफ ग्रेविटी के हिसाब से। इतना लंबा पीस कैसे वो टर्निंग करेगा, कहाँ टर्निंग करेगा, कहाँ पार्किंग करेगा। सो आई एम जस्ट गिविंग वन स्मॉल एग्जांपल। कभी भी आप अगर कोई बड़ा प्रोजेक्ट कार्गो अगर कहीं से मूव हो रहा है तो find some time to closely have a look at it. You will see a lot of things happening, lot of learning you will get out of it. एक फनी है थोड़ा सा, एक डेफिनेशन जो है कि टॉम पीटर्स करके एक यूरोप में कंसल्टेंट था, उसने ये लिखा हुआ है कि लीडर्स विन थ्रू लॉजिस्टिक्स विजन for sure and strategy. But when you go to the war, you need to have both toilet paper and bullets at the right place at the right time. In other words, you must win through a superior logistics. ये जो examples दिए हैं उसमें काफी important है. So what it is trying to say that you need to minutely look at all the positions, parameters, to see that the material is delivered and available at the right time. Now we'll go for distribution channels. We have completed the logistics portion. We'll now go to what are the different types of distribution channels. So basically direct distribution है, indirect है, hybrid है, intensive distribution है, exclusive distribution है और selective distribution है. So what is this direct distribution? Direct means company is directly delivering it to the customer. Company takes complete control of all its logistics and distribution so that it is delivered directly to the customer. Just a minute, I'll just refer some notes what I have prepared. तो डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि you are able to buy the product from the company directly. Now it can be two ways. You can go to the company, purchase it and bring it yourself, or the company will give you directly. उसमें होता क्या है कि you save X works delivery जिसको कहते हैं. So where there are the transportation and logistics is within your scope. And when it is in your scope, you know how to save money on logistics and transportation. So this is where whenever company sells directly to a customer, what happened? कुमार निकल गया. हाँ सर. It's okay. So let us continue. Since you are there, then there is an indirect. Indirect is when you buy products from wholesaler or a retailer. You don't buy from manufacturer. तो जो हम day to day shopping करते हैं, that's a part of indirect distribution. That channel of indirect distribution. You don't buy directly from. The products are distributed by the wholesaler or your retailer. Then hybrid. Hybrid में क्या होता है कि both are वो direct indirect दोनों का combine use होता है. Wherein the manufacturer will take some responsibility and then the best remaining is taken by the wholesalers and distributors. Then intensive. Intensive distribution जो है वो channel में ऐसा है कि it's a form of marketing strategy under which a company tries to sell its products from a small vendor to a big store. Company जो intense marketing करती है कि छोटे से छोटे स्टोर से लेके बड़े से बड़े स्टोर में आपको वो प्रोडक्ट मिल जाएगी.
फॉर एग्जाम्पल यू से FMCG प्रोडक्ट्स, FMCG प्रोडक्ट्स में जो भी प्रोडक्ट्स आते हैं वो आपको करियाना स्टोर में से भी मिल जाएंगे और मॉल में से भी मिल जाएंगे. There are various examples. I gave just one very common example. So where the company is making sure that the product is available from the smallest retail store to the major store, उसको कहते हैं intensive. Exclusive. Now exclusive distribution में क्या है? Company gives rights to a particular dealer. आ गया कुमार, फिर से आया. Yeah, Kumar, we lost you for a while. Yeah, Kumar, sorry, we lost you for a while. I was Yes, talking sir. about Sorry. I was talking about direct distribution channel, जहाँ पे company directly sells it to the customer. There is an indirect channel, where the company gives it to the wholesale distributor. From wholesale distributor, it comes to the retail stores, and you buy from the retail stores. That is indirect channel. And hybrid is one where company uses both. The company through distributor भी material बेचती है और उनका खुद का भी direct delivery होता है. Now, intensive distribution I was talking is about that a company tries to sell its product from a small vendor to a big store. उनकी प्रोडक्ट ऐसी होती है जो छोटे से छोटे स्टोर में मिलती है और बड़े से बड़े मॉल में से भी मिल जाती है. तो एग्जांपल आई गेव वाज ऑफ FMCG प्रोडक्ट्स. कोई भी FMCG प्रोडक्ट ले लो, आपको करियाना स्टोर में भी मिल जाती है घर के पास, और कोई मॉल में जाते हो तो वहां भी मिल जाती है. Then exclusive distribution is that the company gives exclusive rights to another company to distribute his finished goods. Exclusive distribution is a system by which a company grants exclusive rights. Means अगर उसकी, जैसे आप कार ले लो मारुति, तो मारुति और कोई नहीं बेच सकता. मारुति का जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो ही बेचेगा, फिर वो हुंडई की कार नहीं बेचेगा. On its products, exclusive rights on its products or services to another company. For example, not only to the other company, not only for him that you will sell only my product, but you will sell that product only in a particular territory. यानी बड़ौदा में अगर उन्होंने, जैसा लार्ज सिटी है अहमदाबाद, तो मारुति के उसमें 2-3 डीलर हैं. But where there are smaller areas, there they will say कि भी okay, you will sell the products only in these 4 towns. Geographical area भी उनका restrict हो जाता है. Selective distribution is the one where the company selectively decides कि मुझे कहाँ पे कौन से टारगेट ऑडियंस को मेरा प्रोडक्ट बेचना है. Now these are all the high end products. उसमें हाई एंड प्रोडक्ट्स में काफी चीजें आती है. फॉर एग्जांपल आप जो फैशन स्टोर्स देखते हो, एक्सक्लूसिव ब्रांडेड स्टोर्स, जहां पे प्राइस 2000 से ऊपर ही शुरू होती है या 3000 से ऊपर शुरू होती है. There are exclusive distribution rights, selective distribution rights means a selective target audience, selective area, and they don't want कि भी उनके स्टोर में कोई भी बंदा आ जाए. ऐसे आपको भी एक्सपीरियंस होगा कि काफी स्टोर्स ऐसे हैं जहां पे पीपल विल से अगर आपको ये प्रोडक्ट लेनी है, तो अगर ये ब्रांड के लेनी है तो उसका ब्रांड का स्टोर अलग है, and you can buy only from that store. That product will not be available into any other market. फॉर एग्जाम्पल अगर हम बाटा का लेते हैं तो बाटा तो ब्रांडेड है, लेकिन बाटा के शूज अलग आपको रिटेल स्टोर्स में भी मिल जाते हैं.
छोटे मोटे, दैट इज नॉट सिलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन आप चेकर्स की बात करो, चेकर्स का शूज जो होता है, फुटवेयर आता है, वो चेकर्स का फुटवेयर का शोरूम एक ही है बड़ौदा में, या 2 होंगे। एप्पल प्रोडक्ट आप देखो, एप्पल का कोई भी प्रोडक्ट लोगे तो आपको वो एप्पल के स्टोर से लोगे तो आपको एडवांटेजेस ज्यादा है, गारंटी, वारंटी, सर्विसेज काफी। तो एप्पल स्टोर में दे डोंट वांट दैट एप्पल प्रोडक्ट टू बी अवेलेबल ऑन ए रिटेल स्टोर। अभी कभी कभी मिल जाते हैं, लोग करने शुरू हो गए हैं, लेकिन नॉर्मली सेलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन इज द कंपनी वांट्स टू डिसाइड कि मुझे कौन सा टारगेट ऑडियंस है मेरा, यानी उनका अगर टारगेट ऑडियंस सिर्फ अपर लेयर ऑफ द सोसाइटी है तो उसके प्राइसिंग, उसके शोरूम्स और उसकी सर्विसेज अकॉर्डिंगली रहती है, और वो प्रोडक्ट आपको दूसरे कहीं स्टोर में नहीं मिलती है। So what is the definition? A distribution channel is a path by which all goods and services travel to arrive at intended consumer. Distribution channels can be short or long, depend on the number of intermediaries required to deliver a product or service. ये एग्जाम्पल है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में। दिस इज ए डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। प्रोड्यूसर है, दैट इज मैन्युफैक्चरर है, फिर मैन्युफैक्चरर may have an agent, then agent will have a wholesaler, wholesaler will have a distributor, distributor will have a retailer, and then it reaches finally to the consumer. This is a distribution, complete distribution, standard distribution channel. ये जो नॉर्मली ये जो स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो है वो अगर आप देखोगे तो आपको फार्मेसी इंडस्ट्री में ज्यादा मिलता है, और क्या कहते हैं, जो अनाज वगैरह, जो गेहूं वगैरह मिल जाता है, देर एपीएमसी से एजेंट फार्मर जाता है, फार्मर के बाद उसके एजेंट जो है एपीएमसी, फिर वो होलसेलर को देता है अपने सिटी में, फिर वो डिस्ट्रीब्यूटर्स, वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। जैसे आप इफ यू से एनी एडिबल ऑयल, दैट हैज गॉट द सेम चेन। एडिबल ऑयल में प्रोड्यूसर है, उसका एजेंट है, उसका होलसेलर है। होलसेलर में भी नॉट इन वन इन द सिटी, इट कैन बी वन इन बिटवीन अहमदाबाद बड़ौदा, किसी एक को बनाया। Distributor can be there in the city, then distributor will give it to the retailer and then it goes to the consumer. So this is a standard distribution network. Now then the next one is कि जहां पे एजेंट नहीं है, so प्रोड्यूसर से सीधा होलसेलर, होलसेलर से डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर से रिटेलर एंड कंज्यूमर। Then you don't even have a wholesaler. Producer, distributor, retailer and consumer. This you will find it in FMCG products. जहां पे ये लिंक आपकी शॉर्ट हो रही है। Then there are producer, aggregator and consumer. सिर्फ 3 ही रह जाते हैं। ये आप ऑटोमोबाइल सेक्टर में देखोगे आप। Now there is another concept called retailer distribution channel. आपका सिलेबस में भी ये स्पेसिफिकली कवर किया है। So a retailer distribution channel is a system of retailers, wholesalers and other intermediaries who work together to get products to consumers. It includes physical stores, e-commerce sites and mobile applications. Yeah, normally this is mostly after the we saw in the previous, जो थर्ड वन था कि जहां पे कोई एजेंट नहीं है और कोई सीधा डिस्ट्रीब्यूटर से जो कंज्यूमर तक जाता है,
उसके अंदर ये सारा कवर होता है कि होलसेलर और रिटेलर्स मिलके जो प्रोडक्ट उनके पास ले जाते हैं उसमें कभी इंटरमीडिएटरीज होते हैं। जैसे आपने काफी बार देखा होगा कि देयर आर प्रोडक्ट्स जो आपके सिटी में ही बनते हैं। फॉर एग्जांपल बेकरी प्रोडक्ट आप देखो तो बेकरी वाला क्या करता है, उसका एक डिस्ट्रीब्यूटर होता है, वो अपना टेम्पो लेके सुबह सुबह सब जगह पे निकल जाता है, हर एक रिटेलर को देते जाता है। So this is where the wholesaler and the retailers they work together to deliver the cargo. और उसमें ई कॉमर्स साइट्स भी आ जाती हैं, बिकॉज ई कॉमर्स साइट्स क्या करती है, दे आर नॉट वंस दे रिसीव द कार्गो, उसके बाद देयर आर नो पीपल इन बिटवीन, देयर इज नो डिस्ट्रीब्यूटर, ऐसा कोई बीच में होता नहीं है, वो सीधा आपके घर पे आ जाता है या तो सीधा रिटेलर के पास चला जाएगा if retailer has ordered. And mobile applications are used more and more in retail distribution channel where you get communications on your mobile. Now there are 4 distributors, brick and mortar. जो ऊपर जो मैंने अभी जो बोला वही है. Brick and mortar is your किराना stores. आपके एरिया में जो किराना स्टोर्स है उसको अंग्रेजी में एक नाम दिया गया है, कॉल्ड ब्रिक एंड मोर्टार स्टोर्स, कि जो कंस्ट्रक्ट होके ब्रिक और मोर्टार से, मोर्टार यानी सीमेंट, उससे बना हुआ जो है वो एक एरिया है. सो ब्रिक एंड मोर्टार स्टोर्स इज योर रिटेलर, ऑनलाइन रिटेलर, डायरेक्ट टू कंज्यूमर and multi-channel retailing. So these are the four retail distributors. ये ऑनलाइन रिटेलिंग क्या है? ये these are the companies who sell their products online. यानी this is not Amazon, again I am telling you. कंपनी का ऑनलाइन पेज पे अगर आप जाओगे आपको उनकी प्रोडक्ट दिखने को मिलेगी. वो प्रोडक्ट जब आप ऑर्डर करोगे तब जाके वो ट्रांसपोर्टेशन या उसका लॉजिस्टिक्स उसमें आता है. नेक्स्ट टाइम व्हेन यू ऑर्डर समथिंग डायरेक्टली ऑनलाइन, आपने नॉर्मली क्या होता है, ये आर्टिफिशियल ज्वेलरी है, कपड़े हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स है, देयर आर क्वाइट मेनी ऑनलाइन कंपनीज who are selling products online directly to a consumer. Suppose if you are ordering anything online to a consumer, अगर आप कंज्यूमर हो, आपने कोई सिलेक्ट किया है, टी शर्ट चाहिए मुझे, कंपनी से अगर डायरेक्टली जो टी शर्ट आती है उसमें भी जब आप देखोगे तो आपको लगेगा कि ये कंपनी ने कौन से कैरियर को दिया है. वो आपके पास कंपनी से में मैसेज आता है कि हमने ब्लू डार्ट को हैंड ओवर किया है. फिर ब्लू डार्ट के मैसेज आना शुरू हो जाएंगे कि भाई हमने ये पार्सल पिकअप किया है, हम ये आज यहाँ से निकल रहा है. देन फर्दर जो चेन है, जब आपको मिलेगा तो ब्लू डार्ट वाला आपसे या तो ओटीपी मांगेगा या तो आपको सीधा डिलीवर कर देगा. ये डायरेक्ट टू कंज्यूमर में नॉर्मली अभी बहुत कम हो गया है, लेकिन पहले डोर टू डोर सेलिंग काफी होता था. वो डेली यूज के जो प्रोडक्ट्स आते थे फॉर द लेडीज ऑफ आवर फैमिली, दे वुड बाय प्रोडक्ट्स फ्रॉम डोर टू डोर पीपल. दे वुड कम फॉर व्हाट यू कॉल क्लीनिंग केमिकल्स है या साबुन है. वो पहले काफी पॉपुलर था डोर टू डोर सेलिंग. दैट इज अ पार्ट ऑफ डायरेक्ट टू कंज्यूमर, लेकिन अभी काफी कम हो गया है. हार्डली इट इज ओनली इन सम स्मॉलर टाउन्स. अदरवाइज डायरेक्ट टू कंज्यूमर companies are not selling nowadays. Multi-channel it's a combination of all the three. And let us go to the next is wholesale distribution. Wholesale distributors buy products from the manufacturers. By the word itself, हमको पता है ये wholesale market का
सी वी हैव, जब हम छोटे थे तब से अब तक काफी बार हमको दुकान रिटेल वाला बोलता है कि सर मैं आपको ये आई एम गिविंग यू एट ए होलसेल प्राइस, सो डोंट बार्गेन विथ मी. सो द वर्ड होलसेल we know by its use. Very frequently this word is used by the retailers. So wholesale distributors, what they do is they buy products from the manufacturers in large quantities. यानी वो बोलेंगे मुझे 100 टन दे दो, 100 numbers दे दो, 1000 numbers दे दो. So they buy in large quantity from the manufacturer, which are, and sell them at wholesale prices to the customers, which are often commercial establishments, business professionals or retail stores. ये जो मैंने प्रीवियसली जो स्लाइड दिखाई है, तो होलसेल डिस्ट्रीब्यूशन में बेसिकली इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये कॉस्ट जो कंपनी की 25 रुपए की कॉस्ट जब हमारे पास आती है तो 100 रुपए की क्यों हो जाती है? लॉन्गर द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, मोर द कॉस्ट, बिकॉज एट एवरी स्टेप देयर इज ए प्रॉफिट एंड देयर इज ए कॉस्ट. जैसे कंपनी ने किसी एजेंट को दिया, तो एजेंट क्या करेगा? एजेंट अपना प्रॉफिट रखेगा, उसका रिसीव करके स्टोर करने का खर्चा भी उसमें ऐड करेगा, एंड देन ही विल गिव टू द होलसेलर. Wholesaler also will do the same thing. So at every step of distribution channel, there is a cost which that particular channel partner will have, and he will have his own profit. तो जब तक कंज्यूमर के पास पहुंचता है वो 25 रुपए की आइटम 100 रुपए की हो जाती है. Probably you are also aware about this thing. The longer the distribution channel, higher is the cost. तो होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो कंपनी के साथ भी काफी अच्छी रिलेशनशिप रखते हैं, क्योंकि उनको सीजनल बाइंग भी कर लेते हैं वो लोग. वो क्या करते हैं कि सपोज गेहूं की सीजन है तो वो गेहूं काफी मात्रा में खरीद, he will buy it in a large quantity, he will store it and then go on further selling it to downstream. So downstream वाले से भी अच्छा रिलेशन रखते हैं और upstream में भी अच्छा रिलेशन. Now 4 major segments of the wholesale distribution industry. Food and beverage. एक इंडस्ट्री में ये होलसेल डिस्ट्रीब्यूशन काफी चलता है. फूड एंड बेवरेज, जो भी आप बेवरेजेस लेते हो और ये जो एफएमसीजी प्रोडक्ट्स लेते हो, उसमें ये होलसेलर से ही चेन आगे बढ़ती है. I will give you a classic small example. There is an institution which is near to my house. वहाँ वो लोग जब भी उनके कोई इवेंट होती है तो they want to purchase the what you call वेफर्स के जो पैकेट्स आते हैं या बिस्किट्स के जो पैकेट आते हैं, तो जो मार्केट में 5 रुपए 6 रुपए में मिलते हैं. So what they do is they don't buy from the retailer. They go to the distributor in Baroda who gives them at 4 rupees. But again, the volume plays important. अगर हम जाएंगे तो अगर 2-3 पैकेट चाहिए तो वो बोलेगा नहीं आप रिटेलर से ले लो. So food and beverage industry में wholesale distribution is working very effectively, very successfully. Healthcare, all pharma industry. Every pharma industry has a wholesale distribution channel. हमारे बड़ौदा में एक there is a lane called महाजनी गली, महाजन लेन. पूरे बड़ौदा के जितने होलसेलर्स हैं फार्मेसी के, सारे उसी गली में हैं. So the whole chain of pharmacy and healthcare distribution is centralized through wholesale distribution. High tech means again IT related products hai, mobile phones hai, then your automobiles hai. These are all computers hai. These are all high tech products, also are being sold only through wholesale distribution channel. And industrial.
इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में प्योर इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स अगर होती है तो बहुत कम डिस्ट्रीब्यूशन चैनल ऐसे होलसेल में आती है. दे आर ऑल कस्टमर स्पेसिफिक, कस्टमर सेंट्रिक. बट स्टिल इंडस्ट्री में भी देर आर सर्टन प्रोडक्ट्स विच आर बीइंग सोल्ड थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल. ये नॉर्मली क्या स्पेयर पार्ट्स वगैरह जो आते हैं या ऑयल्स आते हैं, इंडस्ट्रियल ऑयल्स जो आपके पेट्रोल पंप पे मिल जाते हैं, वो उसके लिए डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, जो ब्रेक ऑयल, इंजन ऑयल, ये सब जो है वो सारा होलसेल डिस्ट्रीब्यूशन में इंडस्ट्री से आता है. Let us go to direct marketing. So the direct marketing, what happens? The business of selling products or services by communicating directly with the customer, जो आजकल बहुत पॉपुलर है. That is by mail order, text message, catalog or telephone selling, rather than through retailers. Direct marketing में companies don't go through any of that channel. मैंने जो last आपको दिखाया था वो सीधा शॉर्टकट हो जाता है. So you have as I gave you an example, you have many products which are now available on the net, जहाँ पे आप वो कंपनी का कैटलॉग रेफर कर सकते हो. कैटलॉग रेफर करके सिलेक्ट करो साइज, उसमें वो लोग देन देयर आर क्वेश्चनर व्हिच यू हैव टू फिल अप कि क्या साइज चाहिए, कौन सा कलर चाहिए, कितनी क्वांटिटी चाहिए, आपका एड्रेस कौन सा है. काफी से जब ये क्लोज हो जाता है तो ऑनलाइन पेमेंट करके आप मंगवा लेते हो. लेकिन इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी हैं डायरेक्ट मार्केटिंग के. सिलेक्शन ऑफ सेगमेंटेड टारगेट ऑडियंस. डायरेक्ट मार्केटिंग में कंपनी क्या करती है कि दे सेलेक्ट पर्टिकुलर ऑडियंस, ऑडियंस यानी सेट ऑफ पीपल टू हुम कंपनी वुड लाइक टू सेल. यानी अगर आपको एफएमसीजी सॉरी ये ज्वेलरी लेनी है तो कंपनी विल ओनली टारगेट इट टू दी लेडीज. कंपनी को कैसे पता चलेगा ये लेडी है या जेंट्स है सामने बैठा हुआ. So that is a technique that they have evolved from their mobile numbers or from their data which they are collecting from the market. मार्केट में आज काफी सारा डेटा लोग बेचते हैं, इसलिए समटाइम्स यू विल फाइंड अरे ये मेरे पर कहाँ से फोन आ गया, मैंने तो इनको कभी फोन नहीं दिया था. आपको क्रेडिट कार्ड्स के लिए फोन आते हैं, आपको लोन्स के लिए फोन आते हैं. वो कहाँ से आते हैं? बिकॉज ऑल द डेटा दैट इज देयर इन द मार्केट, हमने जहां जहां भी कुछ डेटा दिया है वो देयर आर पीपल हु आर कलेक्टिंग दैट डेटा एंड सेलिंग इट टू कंपनीज. एक बिजनेस है पूरा, नॉट एन हेल्दी वन बट स्टिल इट्स अ बिजनेस. एंड देन दैट इज हाउ यू गेट फोन कॉल्स. अभी टारगेट ऑडियंस में एक चीज भी ऐसे हो सकती है कि उनको सिटीज में ही बेचना है, उनको बी और सी ग्रेड टाउनशिप में नहीं बेचना है. सो ऐसे भी वो लोग टारगेट ऑडियंस करते रहते हैं. देन मार्केटिंग बजट. नाउ इसमें होता क्या है कि बाय डूइंग डायरेक्ट मार्केटिंग उनका जो पूरा मार्केटिंग डिपार्टमेंट है वो एलिमिनेट हो जाता है टू ए ग्रेट एक्सटेंट, बिकॉज एवरीथिंग इज हैपनिंग ऑन फोन और ईमेल. So they don't need to hire marketing people to go and showcase their products, go and do work for marketing their products. उनका प्रोडक्ट नेट के ऊपर अवेलेबल है, आप जाइए नेट के ऊपर, उनका कैटलॉग देखिए, आप ऑर्डर कीजिए और आपको मिल जाएगी. सो योर बजट बिकम्स वेरी ऑप्टिमम इन डायरेक्ट मार्केटिंग. इंक्रीज इन सेल्स. और कैसे इंक्रीज इन सेल्स होता है? आपने भी देखा होगा, अगर आप आजकल देखोगे तो वंस यू बाय ए, अगर आप सर्च भी करते हो, सी टुडेज एआई टूल्स, आपने यूट्यूब में काफी चीजें ऐसी आती रहती है कंपनी के प्रोडक्ट्स. अगर आपने एक प्रोडक्ट को सिलेक्ट किया,
लेट अस से सैमसंग का मोबाइल फोन, आपने एक बार देखा उसको, नेक्स्ट टाइम यू विल सी, जैसे ही आप यूट्यूब ओपन करोगे सबसे पहले आपको सैमसंग की पॉपअप हो जाएगी, फोन्स की डिटेल. Not only one phone, they will give you a series of options in their product range. So what they do is, जो target audience भी है, they have this kind of methods. जिसने एक बार परचेस कर लिया उसको बार बार वो bombardment करते हैं. They will offer you something new product, या फिर then they will ask you कि भाई ये पर्टिकुलर फेस्टिवल आ रहा है, हम आपको 10% डिस्काउंट देंगे, या बोलेंगे आपको हम कूपन देंगे, या हम क्वांटिटी डिस्काउंट देंगे. सो मेनी थिंग्स दे विल बॉम्बार्ड ऑन यू. उससे होता क्या है कि देयर आर पीपल हु टेंड टू ऑर्डर इट अगेन एंड अगेन फ्रॉम द सेम कंपनी इफ दे आर सेटिस्फाइड विद द प्रोडक्ट. द लॉयल्टी स्ट्रेटेजी, ये आजकल काफी अच्छा चल रहा है. यानी अगर आपने सैमसंग का फोन लिया है, या फिलिप्स का टीवी खरीद लिया है, या मारुति की कार खरीद ली है, तो वो कंपनी से आपको लॉयल्टी बोनस मिलता है. आप देखोगे तो ये सब मैंने जो एग्जांपल दिए हैं उसमें आपको लॉयल्टी बोनस मिलता है. एवरी सच कंपनी इज ऑफरिंग लॉयल्टी बोनस, कि अगर आप मेरी एक नेक्स्ट प्रोडक्ट खरीदोगे तो आपको लॉयल्टी बोनस इतना मिलेगा. So what is happening if you have bought from, मैंने क्रोमा, I'll give you my example. मैंने क्रोमा से 2-3 बार कुछ खरीद लिया है पास्ट में, वो भी 2 साल 3 साल 4 साल पहले. I bought some few items. तो I am getting regularly from क्रोमा कि भाई आप लॉयल कस्टमर हो, हम आपको ये स्पेशल ऑफर दे रहे हैं, आप हमारे स्टोर में आइए, आप हमको ये प्रोडक्ट दिखाएंगे, हम आपको डिलीवरी का चार्ज नहीं लेंगे, हम इंस्टॉलेशन फ्री करके देंगे. सो देयर इज ए लॉयल्टी आल्सो इज बीइंग नाउ लुक्ड आफ्टर बाय द कंपनीज सीरियसली. सो उससे क्या हो रहा है, लॉयल कस्टमर्स का एक बेस जो हो जाता है, उससे कंपनी को तो उतना ही है भी मेरा लॉयल कस्टमर आज 1 लाख कस्टमर है जो मेरे लॉयल है, यानी जो मेरी प्रोडक्ट छोड़ के दूसरे की प्रोडक्ट नहीं लेंगे. Suppose, for example, that is what the company has found out, that in India, my loyal customers are 100,000 customers. तो कंपनी को तो श्योर है कि कम से कम 70% तो उसमें से मेरी प्रोडक्ट फिर से खरीदेंगे, which may be a better product, a new model launched. तो काफी चीजें कंपनी को होप रहता है और उससे सेल्स बढ़ जाती है. न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी. अभी न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी कैसे, ताकि ये आपने कोई नई प्रोडक्ट अगर आपने लॉन्च करनी है और आपके पास जो डेटाबेस पड़ा है, वो डेटाबेस में आप बॉम्बार्डिंग करो, एडवर्टाइजिंग करो, ईमेल भेजो, एसएमएस भेजो. उससे क्या होता है कि नई अपॉर्चुनिटीज ओपन होती है. कॉम्पिटिटर का वो ध्यान रखते हैं. एवरी कंपनी लुक्स एट द कॉम्पिटिटर्स बिजनेस. तो उससे भी उनको फीडबैक मिलती है कि भाई ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट ये कंपनी की ज्यादा बिक रही है. I'll give you a recent example. Dabur has introduced Glucon C. अगर आप रिसेंटली एडवर्टाइजमेंट देखोगे, that has started coming in last 15 days. Dabur also has Glucon C उन्होंने लॉन्च किया है. तो अभी तक तो हमारे पास Glucon C तो बचपन से हम देखते आ रहे हैं, वो एक ही प्रोडक्ट है, Glucon C, Glucon D. Now Dabur also is, because he knows, Dabur knows कि अभी ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट का मार्केट में डिमांड ये कंपनी फुलफिल कर रही है, तो दे वांट टू आल्सो हैव अ शेयर आउट ऑफ दैट. So there's a new business opportunity which the company has tried to evolve. Then periodic analysis and correction in strategy. ये periodic analysis जो मैं कह रहा था कि भाई मेरी प्रोडक्ट जो मैं इतने ईमेल भेज रहा हूँ, इतने एसएमएस भेज रहा हूँ, इतने लॉयल कस्टमर्स हैं, जिसने एक ही बार परचेस किया ऐसे भी कस्टमर है,
So company collects the entire data और उसको एनालाइज करते हैं कि what is the effect of my direct marketing, whether it is effective, whether it needs improvement, या तो ये मेरा स्ट्रेटेजी चल नहीं रहा है, या तो उनको लगेगा कि भाई नहीं गुजरात में अच्छा चल रहा है, वेस्ट बंगाल में नहीं चल रहा है, या कर्नाटका में नहीं चल रहा है, या केरला में नहीं चल रहा है, उसके रीजंस क्या है. And the company will go and try to find out why my products are not so popular or not selling so much in other states. So that is another takeaway out of the direct. और उसका फिर वो स्ट्रेटेजी चेंज करते हैं क्योंकि उनकी एडवर्टाइजमेंट उनकी लैंग्वेज में करो, उनकी जो पैकेजिंग है उसको भी वो लैंग्वेज को इंक्लूड करो, और वहाँ के जो सोशियो इकोनॉमिक जो सर्कमस्टांसेस है उसके मुताबिक उसकी एडवर्टाइजमेंट करो. Because advertisement which happens in Gujarat doesn't need to be successful in other states, क्योंकि वहाँ सोशियो इकोनॉमिक पूरा सिनेरियो चेंज है. तो उनको सूट करते हुए वो लोग थोड़ा सा माइनर चेंजेस करते हैं ताकि वो ऑडियंस को भी वो अपील करें. और फर्दर इफ यू सी टच एंड फील फैक्टर, आप देखोगे तो अपने घर में अपनी मदर है, सिस्टर है, वाइफ है, उनको क्या है कि सब्जी जब तक खुद हाथ से नहीं, हम जो सब्जी वाला आता है या सब्जी की मार्केट मंडी में, when they go to the सब्जी मंडी और सब्जी मार्केट, unless they have a touch और feel, कद्दू लेनी है तो जब तक वो कद्दू को हाथ में नहीं पकड़ेंगे they will not feel satisfied. तो ये डायरेक्ट मार्केटिंग के अंदर जो क्या होता है कि वो टच एंड फील फैक्टर कहीं भी नहीं है. इवन यू समटाइम्स विल फील कि मैंने ये कैटलॉग से ऑर्डर तो कर दिया है लेकिन ये ठीक से आएगा कि नहीं आएगा. So the biggest disadvantage is it is missing touch and link, touch and feel factor, which is very important for a common man. आज हम किराना स्टोर में से क्यों लेते हैं? काफी सारी प्रोडक्ट्स हम लेते हैं, जबकि टाटा भी ये होम डिलीवरी करता है सारी चीजें. They even deliver vegetables at your house. लेकिन our mother, wife or sister, they may not feel happy. अरे वो तो कल का भी हो सकता है, सुबह का हो सकता है, शाम को दिया. तो there are so many things which are socially happening. Our buying strategy, individuals' buying strategy is very happy in case if they are able to touch and feel a product. आज आप मोबाइल ऑनलाइन मिलता है, लेकिन आप कितना रिस्क लोगे ऑनलाइन लेने में? उसकी जगह पे आप क्या करोगे? आप पहले कोई नियरेस्ट जो बड़ा स्टोर है मोबाइल का, यू विल गो देयर, सेम मॉडल यू विल सी, आप फील करोगे, देखोगे, प्राइसिंग पता करोगे, देन यू विल गो एंड ऑर्डर इट ऑनलाइन. अब मोस्टली पीपल अवॉइड ऑनलाइन ऑर्डरिंग विदाउट टच एंड फील. वो जो यंगर जनरेशन अभी है, they are taking the risk, but otherwise people prefer कि मैं जो भी खरीद रहा हूँ, I would like to feel the product. So this is one of the disadvantage of a direct marketing. Then direct to customer, since it is a direct to customer, जो भी होता है वो दोनों के बीच में ही हो जाता है, and then customer sometimes get frustrated. Oh, sorry. ये डिफिकल्टीज आपको भी पता हो गया थी. यू आर ऑल्सो मस्ट बी अवेयर ऑफ ऑल दिस डिफिकल्टीज व्हेन यू आर ऑर्डरिंग ऑनलाइन और व्हेन यू आर बाइंग डायरेक्टली फ्रॉम ए कंपनी. डिलेड डिलीवरी, कंपनी से आपने ऑर्डर कर दिया, कंपनी ने बोला कि मैं 3 दिन के बाद मिल जाएगी, तो 3 दिन के बाद नहीं मिलेगी तो आप किसको बोलने जाओगे? कंपनी के साथ या तो ईमेल पे कर सकते हो या उनकी जो हेल्पलाइन है वहां फोन करो. तो जो हेल्पलाइन में वहां जो लड़का या लड़की बैठे होंगे वो कहेंगे नहीं 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 हम तो देख लेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए. और they will have no solution to see that the delivery is given to you in time. जब भी ऐसा रोज नहीं होता है, but whenever it happens,
You have no control over their activities or their response. Product defect. अगर आपको defective product आ गई तो आपको क्या करना है? You have no choice. लेकिन अगर 48 hours के अंदर जो उन्होंने टाइम दिया है, 24 hours or 48 hours, if you don't complain to them about this defect, वो तीसरे दिन आपको बोल देंगे sorry, you have not reported, so we cannot take back the product. So you have to be alert. As soon as you receive, you have to open it and see that it is as per your specification and requirement. फिर उसका रिटर्न प्रोसेस भी लंबा है. आपने रिपोर्ट कर दिया, फिर वो बोलेंगे ठीक है, हमारा कुरियर वाला आके लेके जाएगा, हम दूसरी प्रोडक्ट भेजते हैं आपको. उसमें कितना टाइम लगता है वो कभी प्रॉमिस नहीं करेंगे. I think this must have happened with you on couple of occasions or with your friends. और आफ्टर सेल सर्विस, जब डायरेक्ट कंपनी से लेते हो तो आफ्टर सेल सर्विस के लिए काफी मुश्किल होती है. मींस कंपनी विल से कि आफ्टर सेल सर्विस के लिए दे विल हैव ए जनरल नंबर, 1800 सीरीज का नंबर होगा, वहां पे आप फोन कीजिए, फिर 1 दबाओ, 2 दबाओ, 3 दबाओ, ऐसा करते करते वो आपके पास, अगर जो वहां बंदा बैठा है उससे बात कर सकोगे तो अच्छा है, वरना कभी तो वही बोलेंगे कि डिफेक्टिव प्रोडक्ट है तो उसके लिए 5 दबाओ, तो फिर वो 5 दबाएंगे ना तो उसके बाद वो उसका प्रोसेस आगे जाने ही नहीं देगा. सो आफ्टर, ये तो रिटर्न की बात हुई डिफेक्ट की. सर्विस के लिए अगर आपने कुछ खरीदा है, उसको इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट लिया है सपोज फॉर एग्जाम्पल, उसको सर्विस करवाना है, तो क्या बोलेंगे कि भाई ठीक है आप हमको भेज दो, सेंड इट टू अस. फिर उनको जब भेजेंगे तब पता नहीं उसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा या वो लोग बोलेंगे नहीं आपकी गलती है. I have seen quite a few people who have landed up in fighting with the company on such issues. ये आफ्टर सेल्स टाइम पे नहीं होता है. ये आप लोगों ने भी, आई थिंक यू मस्ट हैव आल्सो एक्सपीरियंस आइदर बाय योरसेल्फ और थ्रू योर फ्रेंड्स. ये डायरेक्ट मार्केटिंग के प्रोज एंड कॉन्स हैं. कंपनी को फायदा है, लेकिन इंडिविजुअल को काफी हिम्मत रख के, आई विल यूज द वर्ड, और करेज रख के, एंड सिलेक्शन, वॉट एवर सिलेक्शन यू आर डूइंग, यू शुड बी श्योर व्हाट यू वांट, और अकॉर्डिंगली अगर ऑर्डर करोगे तो प्रोडक्ट अच्छी आ जाती है. लेकिन अगर अपना नसीब खराब हो गया, इफ इट, देन you will end up into any of these difficulties. Now there is something called e-retailing, electronic retailing. उसका भी short form उन्होंने e-tailing भी कर दिया है. E-retail, also known as e-tail, internet retail or online retail, stands for electronic retail. ये जो current business चल रहा है online का, e-retail, a business or individual sells retail products and services through online stores, जो हमने बात की अभी, जैसे Amazon है, Flipkart है, eBay है, they are all the e-retail stores. तो एडवांटेजेस भी है, जैसे मैंने डिस्कस हमने कर लिया है कि देयर आर एडवांटेजेस ऑफ ऑर्डरिंग ऑनलाइन, वेयर द बिगेस्ट वन इज यू गेट डिस्काउंट्स, तो नॉर्मली आपको आपका रिटेल स्टोर वाला देता नहीं है, मोस्टली बिकॉज दे हैव स्कीम्स, दे हैव से भाई ये कौन सा ब्लैक फ्राइडे या पर्टिकुलर फेस्टिवल के लिए इतना डिस्काउंट है, लॉयल्टी बोनस इतना है, ऐसा करके जो, so as an individual sometimes you are benefited by buying it online in terms of pricing compared to retailer. Retailer आपसे negotiate नहीं करेगा, ये लोग भी negotiate तो नहीं करते हैं, लेकिन they offer on their own various things by which your price comes down.
What are the benefits? Customers save time and effort when selecting a merchandise. यानी आपको कभी स्टोर में नहीं जाना पड़ेगा, वहां जाके फिर रश है, भीड़ है, तो आपको वहां जो टाइम आपका स्पेंड होता है जाने में, देखने में, आने में, तो ये एक भी अपना एक बेनिफिट है. और फिर जब आप स्टोर में जाके परचेस करते हो तो मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल सी कि जो पेमेंट के लिए आपको लाइन में खड़ा रहना पड़ता है. नो स्टैंडिंग इन लाइन एट द चेकआउट काउंटर. ऑनलाइन में एडवांटेज क्या है? देयर आर नो स्टोर आवर्स. दिस इज 24/7. रात को 1 बजे भी आप प्रोडक्ट ऑर्डर कर सकते हो अमेजोन पे फ्रॉम एनी लोकेशन. In e-retail, product descriptions including photos and perhaps a video are available online to assist the customer in making decision. Some e-retail websites may even include chatbots to answer buyers' question. ये आजकल ये chatbot थोड़ा फेमस होने लगा है. IRCTC अगर आप यूज कर रहे हो इंडियन रेलवेज का फॉर टिकट बुकिंग, तो नाउ इंडियन रेलवेज हैव इंट्रोड्यूस दिस चैटबॉट, जहां पे आप उससे चैटिंग कर सकते हो, आपको आंसर्स भी मिल जाएंगे. फिर देन आपका पेमेंट मेथड है जीपे, पेटीएम, काफी जो पेमेंट, क्रेडिट कार्ड है, तो काफी पेमेंट मेथड्स आपके पास अवेलेबल है. जो कि जब आप इंस्टेड इफ यू गो टू एक जनरल स्टोर्स, sometimes they may not ask, they may need cash. Sometimes they will say, if you give me credit card, I will charge you 1% or 2% extra. ये सब नहीं होता है इसमें. So these are ये करंट जनरेशन के लिए ये सारा काफी अट्रैक्टिव है. अभी का जो यंगर जनरेशन है, they are quite happy with this e-retailing. Then वो जो बिजनेस करते हैं उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट इज लोअर फॉर ई रिटेल देन फॉर ब्रिक एंड मॉर्टर. उन इंफ्रास्ट्रक्चर उनको कुछ करना ही नहीं, एक वेयरहाउस बनाना है. अमेजोन क्या करती है? एक वेयरहाउस बना दिया. गुजरात में एक वेयरहाउस है, महाराष्ट्र में एक बड़ा वेयरहाउस है, हर एक स्टेट में एक बड़े बड़े वेयरहाउस है. छोटे स्टेट के लिए 2-3 स्टेट का एक बड़ा बना दिया. तो उनका एस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट ज्यादा नहीं है. देयर कॉस्ट इज ओनली इन IT and its systems, which has to be very accurate. I think shall we stop at this, because ये जो 3PL and 4PL logistics जो है, that ये प्रवीण सिंह करके एक अपना पार्टिसिपेंट है, today he is not there. He has requested कि भाई मुझे 3PL 4PL का I want to understand a little more in detail. So what we do is, since he is not there even today, next session we will start from here. That is logistics and distribution optimization. That is 3PL and 4PL logistics. Okay? Is it okay? Okay, sir. Not an Yes, issue, sir. sir. Next Yes. time when you come, if you have any questions or if you want to know more about some particular topic, do let me know. I will cover it on the same day or at least in the next. क्योंकि लास्ट टाइम जो हमने डिस्कस किया, उसमें he had requested for this 3PL and 4PL. So I have prepared the slides, but then today is not there, so I think let him, we'll see the next time. Otherwise, I will share with you. Okay, not an issue, Okay, sir. sir. Okay, sir. Okay. चलिए, thank you. Thank you very much. Okay, Okay, sir. okay, everyone, sir. Right. Have a nice weekend. Okay. Yeah, So same, thanks, sir. same to you. Okay. મળીશું બરોડા ચલો. ચોક્કસ, ચોક્કસ. Any time. Okay. કઈ પણ પૂછવું હોય, કરવું હોય તો કહેજો મને. Sure, sure, sure. Yeah. 2 દિવસ બરોડા જ છું, કાલે પરમ દિવસે કઈ હોય તો 100% તમને કોલ કરીશ. મારો નંબર હશે તમારી પાસે? પેલામાં આવી ગયો છે હમણાં. આવી ગયો છે ને? Drive બસ. already. You can એમને call share me કરવો. at any time. Yeah, yeah. Sure, 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 sure.
चलो ओके सर मड़ी हेलो कुमार, you also if you see आपकी एरिया में सप्लाई चेन मैनेजमेंट जो आप एनवायरनमेंट में कर रहे हो काम, Yes, वहाँ sir. आप देखिए कि ये सप्लाई चेन मैनेजमेंट कहाँ काम आ रहा है, आपको कहाँ दिख रहा है Yes, sir. कि आप वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का करते हो, तो आपके लिए एससीएम सबसे ज्यादा उसके स्पेयर पार्ट्स, इन्वेंट्री मैनेजमेंट ऑफ स्पेयर पार्ट्स, Yes, sir. वो सब में बहुत काम आएगा आपको। Yes, sir. उसका प्लानिंग, उसका सोर्सिंग, उसका लॉजिस्टिक्स, so that your water treatment plant runs continuously. Yes, sir. तो आपके एरिया में भी ऐसा नहीं है कि कोई लॉजिस्टिक्स नहीं है, आपका Yes, एरिया sir. भी you are more dependent upon having spare parts and standby electrical motors आपको standby रखनी है या कुछ, Yes, sir. so that at least the Yeah, first mainly replace. also we have to deal with the chemicals also, sir. Chemicals also, yes, of course. Yeah. In chemicals आपको you have to be more careful. Yeah. Chemical logistics also is a very typical subject by itself. Yes, Plus sir. storage, warehousing, Yes, sir. वो भी बहुत critical होता है, क्योंकि Yes, sir. hazardous, non-hazardous, Yeah, hazardous में भी बहुत categories है. sometimes also we have to deal with the hazardous waste also, sir, of the company. हाँ, hazardous Because waste, yeah, वो भी एक hazardous बहुत waste. बड़ा headache है. Yes, sir. उसको भी स्टोर करना गवर्नमेंट की गाइडलाइंस भी है और Yes, sir. इंश्योरेंस की भी रिक्वायरमेंट है. Yes, sir. और उनको import भी करना पड़ता है, sir, for disposal. Yeah, mainly. Good. So let me know whenever you want to know anything specific. Yes, sir. Huh? We will cover it Yes. during the sessions. Okay, sir. Okay. Good night. Yes. Thanks, sir. Good luck, sir. Thank you, sir. Welcome. Hey.